यह समस्त विश्वविद्यालय परिवार सम्मानीय अतिथियों का करतल ध्वनियों के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। हम सभी का सौभाग्य है कि विशिष्ट योग विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हम सभी को मिलने जा रहा है। आप सभी से सादर निवेदन करते हैं कि आज के इस उद्घाटन सत्र का, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे एवं विधिवत इस सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। सम्माननीय अतिथियों से सादर निवेदन। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वजायता श्रोत्रान्भा यश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायता इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्नवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतु वस्मासु दत्ता। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता द्वितीया देवता। ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे। I request all of you to please stand on your place to honor the state song. अरे पापैरी के धार महानदी है अपार इंद्रावती है पखारे तोर पैया महू पावे परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया सोहे बिंदिया सही घाट डोंगरी पहाड़ चंदा सूरज बने तोर नैना सुनहा धान के रंग हरियर रंग तोर बोली हवै सुघर मैना अचरा तोर डोलावै पुरवैया महू पाव परो तोर भुइया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया जय हो छत्तीसगढ़ मैया। धन्यवाद। कृपया अपने स्थान ग्रहण कर लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिनानतोऽस्मि।
जिन्होंने मन की शांति और पवित्रता के लिए योग दिया, भाषण की स्पष्टता और शुद्धता के लिए व्याकरण दिया और स्वास्थ्य की पूर्णता के लिए औषधि। आइए हम उन महान ऋषि महर्षि पतंजलि को नमन करते हैं। Who gave yoga for serenity and sanctity of mind, grammar for clarity and purity of speech, and medicine for perfection of health. Let us bow before the noblest of Sheikh Patanjali. आज योग विभाग श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय एवं छत्तीसगढ़ योग आयोग छत्तीसगढ़ शासन के संयुक्त तत्वावधान एवं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर यौगिक साइंसेज के प्रायोजन में वैश्विक शांति एवं प्रसन्नता के लिए योग विषय पर आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के शुभ अवसर पर श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के पावन प्रांगण में विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति एवं संरक्षक अनंत श्री विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज जी को स्मरण कर उनके पावन चरणों में वंदन अर्पित करते हुए आज के मुख्य अतिथि निदेशक CCRYN केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आयुष मंत्रालय भारत सरकार डॉक्टर राघवेंद्र राव एम सर के स्वागत हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर SK सिंह सर से सादर निवेदन करते हैं कि पौधे के रूप में हम सभी के भावों को विश्वविद्यालय परिवार के भावों को आदरणीय सर तक पहुंचाएंगे। यह पूरा विश्वविद्यालय परिवार आपकी गरिमा में उपस्थिति से गौरवान्वित महसूस कर रहा है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है आपके प्रति। साथ ही हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान छत्तीसगढ़ योग आयोग के सचिव, जिनके निर्देशन में विभिन्न परियोजनाओं को संचालित किया जा रहा है जो जनहित के लिए लागू होता है और विभिन्न गार्डनों में जन जन तक योग को पहुंचाया जा रहा है, घर घर तक जिन योग को पहुंचाया जा रहा है। ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री ML पांडे सर के स्वागत हेतु विश्वविद्यालय के माननीय कुल सचिव महोदय डॉक्टर सौरभ कुमार शर्मा सर के सादर निवेदन करते हैं कि पौधे के रूप में हम सभी के भावों को आदरणीय सर तक पहुंचाएंगे। आपका आगमन हम सभी के लिए गौरव का विषय है। And joining us online from Indonesia is the renowned Professor Ketut Dongar, Prasanti Devi Maheshwari Institute, Indonesia. Please welcome with huge round of applause. He will join later. साथ ही हमारे साथ इस सभागार में मंचासीन विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय डॉक्टर SK सिंह सर, हमारे बीच उपस्थित माननीय कुल सचिव महोदय डॉक्टर सौरभ कुमार शर्मा सर, साथ ही डीन एकेडमिक अफेयर्स डॉक्टर RRL बिराली सर और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित कला संकाय के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मनीष कुमार पांडे सर और इस सम्मेलन के कन्वीनर के रूप में उपस्थित डॉक्टर KR चक्रधारी सर का भी हम सभी करतल ध्वनियों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हम सभी के लिए गौरव का विषय है, जहां हम सब वैश्विक स्तर पर योग जिज्ञासुओं से, योग प्रेमियों से और योग को जानने वाले विशेषज्ञों से जुड़ पा रहे हैं। और इसी क्रम में हमारे बीच ऑफलाइन और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों का भी करतल ध्वनियों से हृदय के गहराइयों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में मैं उन सभी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूं जिन्होंने अपने गरिमामय उपस्थिति से इस कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग के सभी पदाधिकारियों का भी इस मंच के द्वारा करतल ध्वनियों से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के अगले क्रम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के मुख्य बिंदुओं से हम सभी को अवगत कराने हेतु एवं हमारे साथ जुड़े हुए सभी प्रतिभागियों के लिए स्वागत भावों को प्रस्तुत करने हेतु कार्यक्रम के कन्वीनर
डॉक्टर केवल राम चक्रधारी सर को सादर आमंत्रित करते हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार मैडम। श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री रविशंकर जी महाराज के पावन चरणों में मैं नमन करते हुए आज इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे हमारे मुख्य अतिथि महोदय डायरेक्टर CCRYN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री राघवेंद्र राव जी, हमारे बीच उपस्थित हमारे अपने छत्तीसगढ़ योग आयोग रायपुर छत्तीसगढ़ के माननीय सचिव श्री ML पांडे जी, श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुल सचिव महोदय एवं विश्वविद्यालय के डीन एकेडमिक अफेयर्स एवं विश्वविद्यालय के समस्त डीन, समस्त HOD, समस्त स्टाफ और प्यारे विद्यार्थियों, साथ ही साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सबसे महत्वपूर्ण देश ही नहीं बल्कि विदेश से ऑनलाइन माध्यम से ऑफलाइन माध्यम से पधारे हमारे प्यारे प्रतिभागियों, आप सबका मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज जो महत्वपूर्ण विषय जिसमें हम आज सम्मिलित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में, वह विषय है योगा फॉर ग्लोबल हैप्पीनेस एंड पीस। आज हम पाते हैं कि योग से आप सभी परिचित हैं और योग का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति, पर वर्तमान में हम देखते हैं कि योग को हर व्यक्ति अपने तरीके से अलग अलग तरीके से अपने लाभ के लिए, अपने इच्छा की पूर्ति के लिए और विविध तरीकों से अपनाता है, पर योग का मूल लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। पर हम जब अपने वर्तमान परिदृश्य में देखते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में विश्व में अधिकांश देश आपसी संघर्ष के कारण, आपसी युद्ध के कारण, आपसी लड़ाई झगड़े के कारण आज विश्व में अशांति का माहौल पनप रहा है। और यह हमारे पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश बांग्लादेश, रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष है, इजराइल और हमास के बीच गाजा पट्टी में जो संघर्ष चल रहा है, भारत और पाकिस्तान और चाइना के बीच जो मानसिक तनाव की स्थिति है, यह सब अराजकता को और क्षेत्रीय अस्थिरता को उत्पन्न करता है और यह क्षेत्रीय अस्थिरता पूरे विश्व की शांति में हलचल उत्पन्न करता है, जो आज अशांति का कारण बनता है। योग हमारा जो प्राचीन विधि है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, जिससे हम जो है सिर्फ स्वस्थ ही नहीं रह सकते हैं बल्कि आप जो है शांति, सुख को, मानसिक शांति को और आत्म स्थिरता को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिसके माध्यम से हम योग में अगर सभी लोग योग को अपना लें तो निश्चित ही सभी का मन संतुलित होगा, सभी का विचार संतुलित होंगे, आत्म जागरूकता प्राप्त होगी और आत्म जागरूकता, आत्मीयता के भाव से सभी जागृत होंगे। तो निश्चित रूप से योग जो है आज सिर्फ भारत देश ही नहीं बल्कि विश्व में आज योग को सभी लोग अपना रहे हैं, मानसिक शांति के लिए, प्रसन्नता के लिए और साथ ही साथ अपने शारीरिक मानसिक विभिन्न जो समस्याएं हैं उनके लिए योग आज उपयोगी हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को मान्यता दी है, जो यह बतलाती है कि योग का जो प्रभाव है सार्वभौमिक है, सभी लोग इसको कर सकते हैं। तो क्या वर्तमान में जो विश्व शांति की कमी है जो दिख रही है, उसके लिए योग हमारे लिए सबको फायदेमंद कर सकता है। व्यक्ति हम देखते हैं, पाते हैं कि व्यक्ति शांति प्रसन्नता के लिए बाहरी वस्तुओं में खोजता है, पर आंतरिक शांति प्राप्त होती है अपने अंदर से, और यह आपको प्रदान करेगा योग के माध्यम से। विविध तकनीक हैं जैसे ध्यान है, प्राणायाम है, योग निद्रा, इन सब से आप निश्चित रूप से अगर विश्व के सभी व्यक्ति, सभी
लोग इसको अपना लें तो निश्चित तरीके से ग्लोबल पीस हैप्पीनेस के लक्ष्य तक हम पहुंच सकते हैं। इसी उद्देश्य के साथ आज का जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय निर्धारित किया गया है, तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण है कि योग को अपनाएं, अपने जीवन में धारण करें, तभी यह लक्ष्य सार्थक हो सकता है। इसी विषय के साथ हम आज अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं, जिसका तीन दिन तक जो है कार्यक्रम होगा। तो इसमें सभी प्रतिभागीगण उपस्थित रहेंगे और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। Thank you, Dr. Chakradhari sir, for that enlightening introducing. We are truly excited about the journey ahead. Next, it is my honor to welcome our esteemed registrar who has been instrumental in making this event possible. Please join me in welcoming address by Dr. Saurabh Kumar Sharma sir. Sir, please. नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये। सकल जगत के उत्पादक परात्पर अखिलेश्वर, अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमेश्वर, विघ्नहर्ता भगवान गणपति, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी माँ भगवती शारदा, विश्वविद्यालय के संस्थापक और कुलाधिपति अनंत श्री विभूषित पूज्य महाराज श्री की मानसिक उपस्थिति को दंडवत प्रणाम करते हुए आज के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की गरिमामयी मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर एम राघवेंद्र राय जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान योग आयोग के अध्यक्ष श्री एम.एल. पांडे जी, योग आयोग के सचिव श्री एम.एल. पांडे जी, अद्भुत शिक्षाविद विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय जी, डीन एकेडमिक्स प्रोफेसर बिराली जी, फैकल्टी ऑफ आर्ट के डीन प्रोफेसर मनीष पांडे जी, योग विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर केवलराम चक्रधारी जी, इस कार्यक्रम का सफल और कुशल संचालन कर रही डॉक्टर राधिका चंद्राकर जी, आशीषधर देवान जी, योग विभाग के समस्त शिक्षक बंधु और होनहार विद्यार्थी जो भारत का भविष्य निर्धारित करेंगे। 3 दिवस का ये कार्यक्रम जिसका विषय है कि योग के माध्यम से पूरे विश्व में सुख और समृद्धि कैसे प्राप्त हो, बड़ा ज्वलंत विषय है कि जहां भी हम देखते हैं, जिन समाचारों को हम सुनते हैं नित्य, वहां कहीं ना कहीं कोई दुखद घटना, कोई संघर्ष, कोई युद्ध की घटना हमको दिखाई देती है। पिछले 3 सालों से तो देखें कि भयंकर युद्ध से ये धरती जूझ रही है, लेकिन भारत की ये धरती बुद्ध की धरती है, युद्ध की नहीं है। इसीलिए भारत कि ऋषि मुनि प्राचीन परंपराओं ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरे विश्व को अपना परिवार माना है और परिवार से प्यार जगता है और बाजार में व्यापार जगता है। जितने भी देश हैं जो युद्ध की और संघर्ष के बीच अपने आप को, अपने नागरिकों को झुलस रहे हैं, उनके अंदर परिवार की भावना नहीं है। उन्होंने केवल हर मंच को बाजार और व्यापार के रूप में देखा, इसीलिए आज वो इस त्रासदी से गुजर रहे हैं। लेकिन वहीं भारत की
ऋषि परंपरा, मुनियों की परंपरा, जो योग की परंपरा है, योग महज केवल एक व्यायाम नहीं है कि शरीर का कुछ व्यायाम करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। शरीर से मन और आत्मा को जोड़ने का नाम है योग। जब हमारे फेफड़ों में सांस चलती है तो हमारी प्राणवायु का स्पंदन होता है, दोनों नाड़ियों से, सूर्य और चंद्र नाड़ी के माध्यम से प्राण अपने शरीर में स्पंदन करते हैं और शरीर चलता है। लेकिन वहीं ये प्राणवायु सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो जाए और हमारे आज्ञा चक्र के माध्यम से सहस्त्राधार में स्थापित हो जाए तो निश्चित रूप से ये हमारे जीवन के कल्याण का कारण और साधन बनता है। यहीं से हमको मोक्ष प्राप्त होता है। मोक्ष की चिंता करने वाला केवल भारत ही भूमि है, और किसी देश में कहीं कोई मोक्ष की कल्पना नहीं होती। वहां तो अपने जीवन को जियो, भौतिक सुख सुविधाओं को भोगो और जितना आनंद अपने जीवन में ले सकते हो लेके और खत्म किए जाए। लेकिन भारत की वही प्राचीन परंपरा जो इसलिए जुड़ती है कि इस जीवन से परे भी कुछ है। 84 लाख योनियां पार करने के बाद एक मनुष्य जन्म लेता है। वो लोग धन्यता की श्रेणी में आते हैं जो मनुष्य योनि को धारण करते हैं। वहीं कुछ वो लोग भी धन्यता की श्रेणी में आते हैं जो जिज्ञासु हैं, मुमुक्षु हैं, आध्यात्म के प्रति चिंतन करने वाले हैं, साधन चतुष्टय की परिकल्पना करने वाले हैं और लोक मंगल, लोक कल्याण की भावना से सबका हित चाहने वाले हैं। वो केवल भारत की भूमि से ही जन्मा वो वीर हो सकता है। अब समय आ गया कि जब 2047 में विकसित भारत होगा, उसके पीछे जो कारण होगा वो भारत की सत्ता होगी। वो भारत के अंदर रहने वाला वो नागरिक, आप जो शिक्षा संस्थान में शिक्षा ले रहे हैं, ये शिक्षा संस्थान, ये विश्वविद्यालय भारत के भविष्य को तय कर रहा है कि भारत फिर से विश्व गुरु की कल्पना करे और बने। उसके लिए आप सब लोगों को इन कार्यक्रम के माध्यम से आपके अंदर चेतना को जागृत किया जाता है। शारीरिक सामर्थ्य योग के माध्यम से आपके अंदर पैदा हो, मानसिक चेतना का विस्तार हो, आपकी सोई हुई सुसुप्त अवस्था जो जागृत कुंडलिनी जागृत हो जाए और आप जान पाएं कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी चर्चाओं को लेके आज ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय की इस पवित्र आध्यात्म की धरती से। मैं धन्यवाद देता हूं मंच पर विराजमान सभी आए मुख्य अतिथि का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से समय निकाला और यहाँ हमारे विद्यार्थियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन के माध्यम से अपने ज्ञान से लाभान्वित करेंगे। दूर दूर तक इसकी गूंज जाएगी और निश्चित रूप से ये 3 दिन का सम्मेलन आगे आने वाले समय में, जहां युद्ध और संघर्ष के बीच में हम अपनी बात रखकर एक संदेश देने में सफल होंगे। मैं विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और योग विभाग और समस्त विद्यार्थियों के लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि जिस उद्देश्य से इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है निश्चित रूप से वो सफल हो और एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास करें। शुभकामनाएं। Thank you, sir, for your insightful words and for your unwavering support in organizing this conference. We are happy to be the part of Viksit Bharat 2047, so that we are organizing this conference. Now, it is my privilege to introduce our Honorable Vice Chancellor, sir, whose vision and leadership continue to inspire us. Please give
A warm welcome to Professor S.K. Singh, sir. Thank you. Sarve bhavantu sukhina, sarve sant niramaya, sarve padrana pashyantu, ma kasyit dukh bhag bhave. Sarve sham swasthir bhavatu, sarve sham santir bhavatu, sarve sham purnam bhavatu, sarve sham mangalam bhavatu. I bow my head to the lotus feet of the founder and the chancellor of this university, Anand Sri Vibhushit Shri Ravi Shankar Maharaj Ji, the chief guest of the function, Dr. M. Raghavendra Rao, the Honorable Director of Central Council for Research in Yoga and Naturopathy. Present as a distinguished guest on the occasion, Shri M. L. Pandey Ji, Honorable Secretary, Chhattisgarh Yoga Ayog, the Registrar of the University, Dr. Saurabh Sharma, the Dean Academics, Professor Birali, the Dean Faculty of Arts, Dr. Professor Manish Pandey Ji, and the convener and head of the Yoga Department, Dr. Chakradhari Ji, the distinguished guests sitting on the dais, my own colleagues, and the most important, the dear delegates who are representing different institutions from across the state, and many of them have joined this function online. So at the very outset, I would like to extend a very warm welcome to each one of you on behalf of the university and also on my own behalf, and a special welcome to the guests sitting on the dais and my distinguished guests sitting in the audience. I would also like to take this opportunity to congratulate the Department of Yoga for organizing this 3-day international conference on a very contemporary theme, Yoga for Global Peace and Happiness. And at the same time, I am thankful to Chhattisgarh Yoga Ayog for joining hands in this international event. I should also not forget the Inter-University Center for Yogic Sciences, Bengaluru, who have been very kind enough to sponsor this program. Let me tell you very frankly that I am not a subject expert. The subject experts in different technical sessions would take you deeper into the theme of the conference. What I shall be doing, I shall be just welcoming you and shall be sharing a few points, hardly 2 or 3 simple points on this occasion. As you know that the world today is struggling. The world today is marked by conflicts, division, differences, full of stress, full of chaos. So these ancient practices of yoga, it offers a powerful means to foster the global peace and global harmony. Beyond physical benefits, as you know that the yoga offers many physical benefits. So beyond these physical benefits, yoga encompasses a holistic philosophy that will be promoting the unity, compassion, understanding, peace, balance. So this is why, since the yoga has potential to promote this unity, compassion, and the understanding, it may be considered as a very strong tool, potent tool to foster the global peace and the global harmony. The first point that I would like to share with you is cultivating inner peace. Inner peace may be considered as fundamental or the foundation to the global peace and harmony. Unless there is inner peace, we cannot think of having this global peace or global harmony which we are talking about. So yoga
With the help of the yoga, we can find the calm and the peace. You can say balance, calm and balance within ourselves. And what will happen? And this calm and peace within ourselves, we can achieve this through practicing, you can say, pranayam, it may be asanas, it may be, you can say, yoga, meditation, or it may be other techniques of yoga. So this way, the inner peace would be there. And this inner peace will be reflected into global thing. Second thing which I would like to share with you is you can say the promoting wisdom and the mindfulness. Yoga, it has a proven fact that yoga can enhance the wisdom, yoga can enhance the mindfulness. And with enhanced wisdom and mindfulness, we will be approaching to any conflict or any differences with a positive attitude. And when we are approaching to any difference or conflict with positive attitude, there is every possibility that we will be able to have the amicable solution, and there will be least possibility of any kind of confrontation. Second thing, that the body, mind, and the soul. If there is a beautiful orchestration, and you can say a better coordination and synergy between the body, mind, and the soul, what will happen? See, this will also lead to harmony. I find a common thread between the yoga and the education, because yoga will be aiming at a beautiful orchestration and better coordination and synergy between the body, mind, and the soul. Similarly, the education is also aiming at the holistic development of the individual students. And when we say that the holistic development of the individual student, it does mean that we are focusing on mental development, physical development, and the spiritual development. And that is nothing but bringing a synergy between the body, mind, and the soul. So like that's this education. So I have seen many institutions, they are beginning their classes with a half an hour of yoga session. In the very beginning, before the beginning of the classes, there would be a common session of half an hour for yoga. And the philosophy and the logic lying behind this is that it is believed that through half an hour of yoga session, the student will be able to focus more, concentrate more on their studies. And whatever they will be studying after this half an hour of yoga, they will be able to acquire more and more. So like this way. So I find that yoga has a great potential to contribute to the peace and also to contribute to the global harmony. As I said in the very beginning that I am not an expert. The expert opinions would be coming by the expert members in the different technical sessions. I hope that the forthcoming technical sessions will be very useful for you, and I would urge upon the participant that they must attend these technical sessions with great seriousness. Only then the purpose of this international conference would be served, and only then they will be able to carry with them towards the end of this international conference something concrete. They would be more enlightened person. Once again, I welcome you all on behalf of the university and also on my behalf. And at the same time, I would also like to express the gratitude and thankfulness to our chief guest and also the distinguished guest for his sparing time and making this international events a real events. I am also thankful to that a learned speaker from Indonesia who would be joining the conference later on online. So the university would also like to express its gratitude to that learned speaker. I wish this 3-day international conference on a very contemporary theme, the yoga for global peace and happiness, with a grand and great success. Thank you very much. Thank you, sir, for your inspiring address regarding yoga and holistic well-being. Today, yoga is becoming the tool for happiness, and of course, in yoga, it is said that about asana, the practice of asana removes the conflict, tato dandvana vighata, and we are moving towards the peace. Now, this is the time to introduce Mr. Ketu Dungar sir,
who has sent his video today morning due to his busy schedule. I would like to introduce Professor Ketu Dongar sir. Professor Ketu Dongar has Masters in State Educational Science Teacher Training Institute, Yogyakarta, Indonesia. He has completed MPhil from Brahma Vidya IGB Sugriv State Hindu University, Bali, Indonesia. He has done his PhD from Rabindra Bharati University, Calcutta, West Bengal. He has 30 years of vast experience in the field of yoga. He has performed many responsibilities as head, chairman, secretary in many reputed organizations. Currently, he has the duties like Secretary General of World Hindu Parishad, member of the Expert Council of Indonesia Hindu Scholar Association. He is Secretary of the Indonesian Hindu Lecturer Expert Council. And he also performed academic responsibilities as author, writer, speaker, board reviewer, peer reviewer in many international and national journals. So I request Deepak sir to please play his video. Myself, I am Ketu Dongar from Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwa, Denpasar, Bali. Today I come on International Conference of Yoga. The first, the Honorable to Vice Chancellor of Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur. Honorable to Head Department of Yoga, Shri Rawatpura Sarkar University, Raipur. And the Honorable Chairman Committee of the 3-day International Conference on Yoga, Global Peace and Happiness. In the 3-day international conference, Yoga for Global Peace and Happiness, I also added the subtitle Ratu Bagus Bioenergy Meditation, a meditation, the dance of soul, holistic spiritualism and cosmic consciousness builder. In the first, I will give the abstract of my speech. I take the reference from the book written by Sri Ananda by the title of his book, The Complete Book of Yoga. Yoga is regarded as a science and well as a method that allows man to live an harmonious life while pursuing his spiritual progress through the control of mind and body. The asanas, or yogic posture, and pranayama, or breath control, better known as hatha yoga, are practices which not only help one acquire perfect health, stay young and live longer, but is designed to develop the inner force that enable us to overcome our failing and withstand stressful situations with serenity. It prepares the body for high state of yogic posture, such as concentration and meditation.
Hatha Yoga does complement Raja Yoga, whose supreme goal is the attainment of state of super consciousness. The great yogi tell us that those who know how to combine yogic posture or asana, breathing exercise or pranayama, and the control of the mind or concentration or dharana may attain a state of perfection. The object of the asanas and pranayama is the improvement to the human body from a physical point of view, while the control of the mind, namely the constructive power of the consciousness, is beneficial to the inner force, developing a positive, optimistic outlook on life. It eliminates the fear of premature old age and death, bringing with it state of serenity. Yoga should be taken as a method to obtain perfect health and maintain the physiological harmony of the body, as well as to achieve a state of mental perfection by progressing spiritual as a result of complete self-control. We may conclude from this that yoga is universal. It is a path on which all those who have determination may start, whatever their age, social status, belief, or religion. Yoga does not contain any mystery and is accessible to everyone. There is just one condition: it must be practiced regularly under proper guidance. Yoga bringing hope and self-confidence to all those who are disappointed by their materialistic life or are inextricably bound up in all sorts of problems. It is cast light on the practical and psychological side of life's problem and those of our spiritual conscience. It is a unique method for us to allow our personality to unfold to its fullness existence. Yoga teaches us to live reasonably and avoid uselessly squandering our energy. It also shows us how to exercise self-control and preserve a positive attitude toward life. It is in this way that yoga leads us towards universal love, for it is by love alone that may create a brotherhood of man between the various nations of the world. This is mentioned in Shri Ananda book, and the title, The Complete Book of Yoga. And very connect with our condition in Bali, in the book of Shri Ananda, that is about the meditation. Meditation helps us to rid ourselves of emotional conflict, inner discord, and psychological tension. It completely purifies the mind and free it from unconscious
abstraction. Meditation enables the inner light to manifestation itself. This is a responsibility for the awakening of self-awareness. Hence, one may penetrate to the very center of life, highest value. The subject of meditation may be the supreme self, pure existence, or universal value. The communist tradition method consists in concentrating one's attention on an object of personal value or a universal symbol. According to our discuss, we find in Bali one of the systematically for meditation. It called Ratu Bagus Bioenergy Meditation. Problem, it never given solution that the person of bioenergy meditation science humankind will be get enlightened. In the term of this exercise, the concept of movement on each participant is different, expressing the dance of soul of exercise participant. I think it is my opinion, my view of the little of my view about the yoga to make the global happiness. Om Shanti, Shanti, Shanti. हैं जिन्होंने कर्म योगी के रूप में विभिन्न पदों पर रहते हुए समाज को योग से जुड़ने के लिए बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिए जिनके माध्यम से समाज योग के साथ जुड़कर लाभान्वित होता रहा है। आप परिवीक्षा में संप्रेक्षण गृह में अधिक समाज कल्याण विभाग संचालनालय के अंतर्गत अपर संचालक के रूप में और साथ ही वर्तमान में छत्तीसगढ़ योग आयोग में सचिव के पद पर आप कार्यरत रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं और समाज हित में अपने कार्यों को, अपने समय को लगा रहे हैं। इन विशिष्ट उद्देश्यों के साथ आपने विभिन्न पदों पर रहते हुए अतिरिक्त प्रभार के साथ भी समाज को अपने कार्यों से, अपने उद्देश्यों से, समाज हित के लिए आप अपने समय को लगाते रहें। ऐसे व्यक्तित्व के धनी हम सभी के बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्री ML सर से हम सभी निवेदन करते हैं कि अपने उत्कृष्ट उद्बोधन से हम सभी को लाभान्वित करें। आदरणीय सर। सर्वप्रथम श्री रावतपुरा यूनिवर्सिटी के संस्थापक अनंत विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज के श्री चरणों में सादर नमन। आज के अंतर्राष्ट्रीय योग संगोष्ठी में जो अतिथिगण हमारे बीच उपस्थित हुए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र राव जी, डायरेक्टर CCRYN आयुष मंत्रालय नई दिल्ली, कुलपति महोदय प्रोफेसर SK सिंह, कुल सचिव डॉक्टर सौरभ कुमार शर्मा जी, डीन एकेडमिक प्रोफेसर RRL बिराली जी, डीन फैकल्टी ऑफ आर्ट प्रोफेसर मनीष कुमार पांडे जी, डॉक्टर केवल राम चक्रधारी जी जो योग आयोग के विभागाध्यक्ष हैं, डॉक्टर कप्तान सिंह जी हमारे विभाग से सेवानिवृत्त हुए, हमारे सहयोगी साथी श्री राजेश तिवारी जी,
एवं यहाँ उपस्थित योग आयोग एवं योग विभाग से जुड़े हुए सभी प्रोफेसरगण, यहाँ उपस्थित सभी हमारे योग एवं साथीगण, आज श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी द्वारा वैश्विक शांति और खुशी के लिए योग विषय पर त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय योग संगोष्ठी आयोजन हेतु आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम में आपके संस्थान के साथ राष्ट्रीय छत्तीसगढ़ योग आयोग भी सह आयोजक के रूप में सहभागिता प्रदान कर रहा है। आज के परिवेश में राज्य के समस्त योग विषय के छात्र छात्राओं एवं योग साधकों को योग संगोष्ठी के माध्यम से बौद्धिक ज्ञान में वृद्धि करने का बहुत ही सराहनीय प्रयास आपके संस्थान द्वारा किया जा रहा है। राज्य के जन सामान्य को स्वस्थ जीवन शैली, निरोगी शरीर, नशा मुक्त जीवन, स्वस्थ मस्तिष्क, संवेदनशील और ऊर्जावान व्यक्तित्व का निर्माण करने के उद्देश्य से दिनांक 25 अप्रैल 2017 को छत्तीसगढ़ योग आयोग का गठन किया गया। गठन के पश्चात से ही योग आयोग योग के प्रचार प्रसार एवं योग से होने वाले लाभ से जन सामान्य को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योग प्रशिक्षण कार्यक्रम, योग प्रतियोगिताओं एवं योग सेमिनार वेबिनार का आयोजन किया गया है। छत्तीसगढ़ योग आयोग अपनी अल्प सेवा अवधि में ही अनेक कीर्तिमान बना चुका है, जिसमें श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी का समय समय पर हमें सहयोग मिलता रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पर संगोष्ठी कार्यक्रम है उसके लिए अपनी ओर से योग आयोग परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। निश्चित ही आपका आगमन हम सभी के लिए गौरव का क्षण है और जिस तरह से छत्तीसगढ़ योग आयोग ने विभिन्न परियोजनाओं के साथ, चाहे वह गर्भवती महिलाओं के लिए योग हो, बालिकाओं के लिए, किशोरी बालिकाओं के लिए योग हो, छोटे बच्चों के लिए योग हो, इस तरह से जो परियोजनाएं चल रही हैं, निश्चित ही आने वाले समय में आपके सह संयोजन के साथ योग विभाग श्री रावतपुरा सरकार विश्वविद्यालय के जो युवा वर्ग हैं, विद्यार्थीगण हैं, आने वाले समय में आपके साथ साथ चलेंगे और जिस तरह से महाराज जी का एक स्वप्न है, सपनों का जो विश्वविद्यालय है जिसका उद्देश्य लोकहित भी है और योग को साथ में लेते हुए लोकहित के रास्ते पर हमेशा चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके उत्कृष्ट उद्बोधन के लिए। कार्यक्रम के अगले क्रम में हम सभी के बीच मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान, जिन्होंने अपने जीवन क्रम में रूमेटाइड अर्थराइटिस, प्री डायबिटीज़, सीवीडी, रिस्क प्रिवेंशन, कैंसर जैसे विशेष बिंदुओं पर, विशेष रोगों पर अपने योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा के इंटरवेंशंस को लागू करके उन पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स किया और उनके लाभों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया और ऐसे उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपको सुशीला ठाकुर प्रकृति मंदिर प्राइज से भी नवाजा गया। साथ ही एस व्यासा में बेस्ट थीसिस के लिए मोनन मनी रुद्रा अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। साथ ही अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी के द्वारा आपको एस्को कानकर कैंसर फाउंडेशन मेरिट अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। साथ ही आप वर्तमान में इंडियन जर्नल फॉर योग एंड नेचुरोपैथी, जो CCRYN मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा संचालित जर्नल के आप एडिटर भी हैं और हम सभी के लिए सौभाग्य है कि आपका आगमन हमारे बीच हुआ। वर्तमान में आप CCRYN के आप डायरेक्टर के पोस्ट पर पदासीन हैं और शोभायमान हैं। आपका आगमन पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गौरव का क्षण है। आपके विचारों को सुनने के लिए हम सब लालायित हैं। ऐसे गरिमामय व्यक्तित्व के धनी आदरणीय डॉक्टर राघवेंद्र राव एम सर को ससम्मान सादर आमंत्रित करती हूँ उत्कृष्ट उद्बोधन हेतु। आदरणीय सर। Very good afternoon to everybody.
How are you all feeling? Good? Thank you. Respected dignitaries on the dais, Professor S.K. Singh ji, Vice Chancellor of Shri Rawatpura Sarkar University, respected Registrar Saurabh Kumar Sharma ji, Secretary of Chhattisgarh Yoga Ayog Shri M.L. Pandey ji, Professor Birali ji, Professor Manish Pandey ji, all the faculties, staff and students of this university and all the yoga sadhakas. Greetings to you from Central Council for Yoga and Naturopathy, Ministry of Ayush, Government of India. I am very thankful to the organizers here, Professor Kaptan Singh ji and the yoga department here for having me here to talk on this august occasion. It's a very important topic today, looking at what is happening in Ukraine, what is happening in Middle East. The war is not far away, it can also knock our doorsteps. So global peace is important. So what gives you global peace? Only if the nation is contented with itself, it is not warmongering, it doesn't want to acquire some other's property, that is when you have global peace. So first you need to have peace within yourself to look at global peace. When you don't have peace, then there's not going to be any global peace at all. Today we live in a materialistic world. What is materialistic world? We are always behind our desires. Simple thing, small child you take, he is passing by a toy shop. What does he do? He starts crying, I want this balloon, I want this toy. Okay? The father will say, come on, go on, he'll drag him. No, you go here. Again he goes a little bit further, there's one more toy shop. Again he'll make the same tantrums. Father will say, okay, fine, let me give him something. So you get him a toy. The child is very happy with the toy and he goes to his home. After 1 or 2 hours, he's playing with the toy. Then after half a day, next day morning, you see the toy is thrown at some particular part of the room. Child is not interested in the toy anymore. So what is this? Child was very happy. He was crying for getting the toy. The toy was given to him. He was so happy. He stopped crying. Then suddenly after some time, next day morning, I'm seeing he's thrown the toy there. And again, he's in the same state of mind. Cranky all the time. What does it say? Talks about the state of mind. So the whole essence of Upanishads talk about two things. Sukha Dukkha Pariksha and Atma Pariksha. What gives me the pain, what gives me pleasure. Understanding this is essence of yoga. And today we are caught in this particular materialistic world. Our wants and our desires are never ending. Today you took one car, tomorrow you see a new model is coming, you want that car again. You took a house, you saw your friend had a bigger house, you want a bigger house again. You're always behind power, you're always behind money, you're always behind pleasure and comforts, which makes you think that these are things is going to give me happiness. But you're so tired of running behind those things that you're always stressed, your mind is always running. And even if you have all the things with you, suppose you are a millionaire, you have a very big bungalow, very big house, etc. You always have the fear of losing them. You're so attached to it. What will happen if I die? Who is going to take care of my bungalow? Who is going to take care of my farm? Okay? This is what is happening. I'll give you a simple example. I worked a lot with cancer patients all this while. There's one patient of mine, very rich, okay, millionaire we can say, I won't name the patient, in Bengaluru. Her children were also in US and Australia, and she was alone. The elderly lady was around 72 years, alone, with breast cancer, cancer spread to all parts of the body. Okay? She was in the deathbed in a hospice, terminally ill hospice palliative care center. They were giving her morphine injections, painkillers, everything to reduce her pain. Pain never went off. She had severe pain. She couldn't sleep. Whole night she couldn't sleep. She was groaning in pain, moaning in pain. Okay? Then I was working in the cancer hospital. They asked me, why don't you come and just talk to her and see if yoga can help. Because nothing was working them. Not a painkiller was working, morphine was not working, nothing was working. Then I went and just talked to her. She was in pain. First day, second day, 2 days, 3 days I went and talked to her. Little bit I was able to get in touch with her and talk to her for some time. And then fourth day, I started talking to her and asked her, what is it you're worried of? I think something is bothering you, that's why you're
having so much pain. Tell me what is it worried about? Then she was just lit up. Doctor, you said correctly. This is what I wanted to hear from you. I said, what is your problem? I have huge amount of money, I have wealth, I have everything. I have given this all to my children. No, they don't come and see me also. They just put me in this hospice care. I have a dog which is alone at home. Nobody is feeding the dog. I don't know what is happening to him. He is my only companion. And I don't know after I die, what is going to happen to this dog. Imagine this patient. She has everything in life, but so much of pain. So what I did, next day morning I took my friend, who is also an animal lover, and I took him to the house. We went to the house, took the dog, brought the dog to the hospice care center. All her pains just disappeared. She started petting the dog, and you can see her smile on her face, all the tears rolling down from her eyes. No pain that day. She died peacefully, sleeping that whole night. She slept very nicely, and next day she was no more. Because she was with that particular thing that we told her that he's going to take care of this dog, don't need to worry about it, relax, okay, don't be concerned about it. All her pain disappeared. Sukha Dukkha Pariksha, very, very important in our life. So some things give you a lot of pain, some things give you a lot of pleasure, right? And we are always running behind this pleasure in getting this happiness because of our sensory desires. And that is what is causing the pain also. If you don't get, what will happen? You will feel disappointed, you will feel dejected. We are in what is called Indriya Jala, caught in the cage of all the sensory pleasures. And yoga teaches us how to go about it, outside of it. Simple example again, I give you one jamun, you will eat. You like jamun, rasgulla, you will eat 1 or 2, nice. 3, 4, okay, enough. 5, 6, you will feel like vomiting, right? So more and more you try to give these desires, try to satisfy them, you can't satisfy them. It will go to a state of aversion. Okay? So this over a long period of time is not happiness. So what is giving you happiness? Not the desire. Then suppose your mind you are in a different frame of mind. You are upset today for some reason. Somebody had a fight with a wife, or somebody had a scolding from their parents, whatever it is. You are upset completely. Even though somebody brings a favorite food to you and give you, you won't take it that day. No, I don't want. I'm not in the mood to eat. I'm not hungry. You will say this. What is this? State of mind. So it's not desire. State of mind also plays a role in how you perceive happiness. Your mind is not good today, you will not be happy at all. Okay? State of mind is also again important. Now, this is not just related only to sensory pleasures. Let us see other situation. Suppose you like a very nice suspense novel, detective novel. You are reading a novel. You're so much engrossed in the novel, you want to finish one chapter after another, one chapter after another. Your mother is calling you. Come and have your dinner. You not even hear about what your mother is telling. You keep on reading. The mother will come, hold your ears, come and have your food. Then you will go there, have your food. Then again you will sit, every day you will sleep at 10 o'clock. That day, you sleep till 2 o'clock, you will keep on reading the novel. You want to finish that novel. What is here? What is happening here? Concentration. Complete absorption in the novel. So when you are given some particular task, you are completely absorbed in the work, you are completely concentrated in the work, all other distractions have gone. Isn't it? No distraction, everything is gone. Complete one-pointed awareness, concentration. So what is happening here? That's also giving you happiness. Right? But this again is not real happiness. If you make you read the same book again, will you be able to read it? Will it give you happiness? No. So what gives you happiness? Manomaya kosha won't give you happiness. Mind won't give you happiness. Intellect, concentration, Vijnanamaya kosha doesn't give you happiness. You have to go beyond that. How do you find out the happiness state? Anybody has an answer? You all go to the state of happiness, the inner happiness state which is inside you. When do you go? Nidravastha. You go to sleep, you are aware of your body. Then you go to dream state, you are aware of the dreams, thoughts, you are aware of the breath. Then beyond that, when you go down to deeper sleep, no awareness of your body, no awareness of dreams, no thoughts, no space, no time. Lost in awareness. You get up, see the watch, oh, I slept so much time. I didn't know I slept so much time. So what is this state about?
That's the internal state you went to, but you're not aware of it. If you attain the same state when you are awake, that is meditation. Attaining touching that state with wakefulness is nothing but meditation. The simple definition of meditation is this. Okay? So my friend, to do that particular state, to do meditation is not an easy task. Because the mind is always wandering here and there. The moment I ask you to do Shavasana, you will go to dreams. Okay? The moment I ask you to do meditation, focus on something, your mind keeps wandering here and there. You have to restrain the monkey mind. Focus it on one thought. Slow down the thought process in the mind. What is yoga? Manaha prashamana upayaha yogaha ityabhidhiyate, says Vasishtha says. Calm down the mind. So mind is awake, what happens? You have a lot of thought process, beta waves. You do deep breathing, slow deep breathing with pranayama, try to calm down the mind, it becomes alpha waves start coming. Then you start making the mind fit for concentration, dharana, sutta, yogata, manasa. When you start doing that, your mind becomes focused, then it keeps slowing down, you have alpha waves. Then you go to a state of samadhi, what happens? You go to a state of stupor, slumber. You are not aware of anything. If somebody puts a pin on your skin also, you will not feel. Pain also you will not feel. That is a state of samadhi. So trying to go to that particular state with repeated practice of yoga is what is taught to all of us to understand this happiness. First thing is understanding happiness, trying to understand that state is there inside, touching that state repeatedly by doing yoga. You do asana, right? When you do asana, you have aches and pains in different parts of the body. You do a lot of internal awareness on which part of the body you have aches and pains. You slow down, calm down, relax those particular part of the body by breathing and awareness and relaxation. Once you do that, it is called Stiram Sukham Asanam. You attain that effort which you put becomes effortless. Okay? So normally, you know what is your breathing rate? Normal breathing rate of a person is 12 to 20 per minute, right? How much time can you hold the breath? Anybody any idea? How much time can one hold the breath? What is the record for that? Anybody any guess? Anybody can make a guess? A record for holding the breath. 24 minutes. Can you imagine? So what yoga can do is tremendous. Okay, this is done by a Belgium scuba diver. He held the breath for 24 minutes, 43 seconds. Okay, and how do they do this? By doing pranayam, kumbhaka pranayam. Puraka, kumbhaka, rechaka. Puraka, kumbhaka, rechaka. Each time increasing the length of kumbhaka. Kept on practicing this. The Navy SEAL divers in US, they practice the same thing. They call it as box breathing. They give a different name to it, called as box breathing. But it's nothing but pranayam. Okay, we have forgotten this science, but they are all using it. You heard about Michael Phelps? Who is he? Who is Michael Phelps? He is an Olympic champion, 22 gold medals in Olympics in swimming. US Olympic champion, swimmer. His coach had come to Bangalore, known as John Back, very great physiotherapist, and he also works with muscular dystrophy patients. So what he told me was, the secret behind Michael Phelps, why is he getting the gold medal, is that he doesn't need to come out of water. So what he was doing what was called glossopharyngeal breathing, using the neck muscles, swallowing the air completely, inflating the abdomen, increasing the tidal volume of the lungs. Okay, normal tidal volume is 6 liters. He was able to increase the tidal volume to 18 liters. So he did not have to come out of the water. And what is this glossopharyngeal breathing called in yoga? Anybody knows? Plavini pranayam. Plavini pranayam. You swallow the air, inflate the abdomen and float on water. Okay? This is already there in our text. Long before even these people started inventing it and using it in the last 30 years or so. So they're all very, very good things which can help in calming down the mind. Breath is the bridge between your mind and the body. If you want to calm down your mind, have control over the breath. Okay? Because it stimulates the different parts of your brain. There's a part of the brain, the frontal lobe, which is there, which is very useful for calming down. If you have pain also, it can take care of pain. You heard about people today, they go to music meditation, musicians. They go into trance after playing music, and you can even do surgery on them. Okay, that is the kind of experience. You look at yogis today, Swami Rama and other people, they are able to increase the heart rate to about 330 per minute
at will and slow down the heart rate to almost 20 to 30 per minute by will. Heart is not under our control, but they are able to exert control. So that is the kind of power of yoga. If you go to higher shades of yoga, if you start accomplishing these practices, you can do many wonders. Okay? And what is the important goal of yoga is happiness, I said to you. So people who are yogis, no, they're beyond all these things, beyond materialistic pursuits. They have already learned to accept defeat, accept failures, accept success, everything in equanimity. Samatvam yoga uchyate. That state of mind is what one should start learning to cultivate. When you cultivate that, stress will come down. All the NCDs you see today will also come down, and you'll be able to do better in your life. So with this, I would like to end the session. I thank you all for the patient hearing and wish the conference a grand success. Thank you so much. Thank you very much, sir. What I learned from your speech is that quality of our life depends on state of our mind. What I learned from your speech is that inner peace, outer dynamism. One small incident came in my mind. When we are child, we like chocolates, and if you don't get chocolate, then we are unhappy. When we grow younger, that chocolate doesn't matter to us. What we like latest bike and car. When we grow older, what happens? Bike and car doesn't matter to us. Our job. After job, our marriage. After marriage, our child. We're just postponing our happiness. But what I learned from sir is that happiness is right this moment. And yoga is the tool to get that happiness, that peace. Once again, thank you for your valuable words, sir. Now, I would like to request Honorable Vice Chancellor, sir, to kindly felicitate our guest, Dr. M. Raghavendra Rao, sir, with Guru Prasad and shawl as token of our respect and gratitude, sir. I request a huge round of applause for his valuable time. He just traveled far from New Delhi, gave valuable time to us. Thank you, sir. Now, I would like to request Honorable Registrar Sir to felicitate our guest, Mr. M.L. Pandey Sir, with Guru Prasad as token of our respect. Adarni Sir. एक छोटी सी अनाउंसमेंट है। 29 अक्टूबर को हमारा प्रधानमंत्री जी मोदी जी एक शिलान्यास कर रहे हैं वर्चुअल मोड पे, यहीं पे रायपुर पे एक 100 बेड का सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर योगा और नेचुरोपैथी यहाँ पे होने वाला है। तो आप सबको बधाई है, क्योंकि ये रायपुर में हो रहा है और कन्वेंशन सेंटर के पीछे वाले जो ज़मीन है, जो आयुर्वेद कॉलेज के सामने वाला ज़मीन है, वहाँ पे हो रहा है। उसकी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे और यहाँ पे सम्माननीय जी मुख्यमंत्री जी और हेल्थ मिनिस्टर सब लोग यहाँ पे पधारेंगे उस फंक्शन के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग भी उस फंक्शन में आए। आपको वहाँ पे 9:30 बजे वहाँ पे रहना है सुबह, उस फंक्शन पर। पहले हमारा
अतिथिगण जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं वो लोग वहाँ के फंक्शन में कार्यक्रम में भाग लेंगे। उसके बाद लाइव टेलीकास्ट होगा जहाँ पे प्रधानमंत्री जी इस शिलान्यास का उद्घाटन करेंगे। नमस्कार। Thank you, sir. And definitely we will be there with our students. Now I would like to request our Dean, Faculty of Arts, Dr. Manish Pandey, sir, for vote of thanks. धन्यवाद आशीष सर। नमस्कार। वैश्विक शांति और प्रसन्नता के लिए योग, इस त्रिदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आप सभी का सादर अभिनंदन। और हमारे बीच इस सभागार में मंचासीन गरिमामयी उपस्थिति के साथ मुख्य अतिथि महोदय डॉक्टर एम राघवन राव सर ने अपने उद्बोधन में इतने बहुमूल्य शब्दों और समझ को आपके साथ साझा किया। निश्चित रूप से ये आपके लिए, आने वाले भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। योग की उपादेयता हमारे जीवन में क्या होगी, ये हमारे मुख्य अतिथि महोदय के शब्दों से हमें समझ में आया। आपको आपकी गरिमा में उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने गंभीर शब्दों को, गंभीर संदर्भों को बहुत ही सरल शब्दों में हम तक पहुंचाया। मंचासीन विशिष्ट अतिथि श्री एम.एल. पांडे सर ने भी छत्तीसगढ़ योग आयोग, जो हमारे सह प्रायोजक भी हैं इस सम्मेलन के, उसके संदर्भ में हमें योग आयोग की उपादेयता और जो अब तक कार्यशैली रही है उसके बारे में बताया। आपका भी बहुत बहुत आभार सर। आपने अपनी बहुमूल्य समय देकर के हमें कृतज्ञ किया। इसके बाद ऑनलाइन मोड में प्रोफेसर कुटेट डोंडर सर ने अपनी योग संबंधी अभिव्यक्तियों से हमें कृतार्थ किया। आपको भी सादर आभार। धन्यवाद केवल शब्दों से दे पाना यह निश्चित रूप से एक केवल फॉर्मल प्रतिक्रिया ही मात्र हो सकती है। सारी अनुभूति तो आपके अभिव्यक्ति के साथ आपके अंतस में होती है। हमारा निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन करने वाले माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस.के. सिंह सर ने अपनी बहुमूल्य समय देकर के हमारे बीच उपस्थिति और अभिव्यक्ति दिया। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सम्मानीय रजिस्ट्रार महोदय जो प्रायः आशातीत बहुत ही गहन विमर्श को अपनी वाणी में हमारे सामने रखते हैं, हम उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में को सफल बनाने के लिए अथक परिश्रम करने वाले इस आयोजक मंडल, सलाहकार समिति और आमंत्रित वक्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। विशेषतः डॉक्टर केवलराम चक्रधारी, प्रोफेसर कप्तान सिंह सर, डॉक्टर परमानंद साहू सर, श्री आशीष धर दीवान सर और संचालन कर रही डॉक्टर राधिका मैडम, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभागार में उपस्थित सभी संकायाध्यक्ष, प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, सभी शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को अपनी गरिमामय उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे महत्वपूर्ण, इस सम्मेलन से जुड़ने वाले सभी प्रतिभागियों, अपना समय निकाल करके इस सभागार में उपस्थित होने वाले सभी विद्यार्थियों जिनकी जिज्ञासा योग को जानने और समझने की है,
उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ उपस्थित हुए और इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को सफल बनाने में आपने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने में पीआर टीम, तकनीकी टीम, यूनिवर्सिटी के सभी कर्मचारी, इसके अतिरिक्त सभी ज्ञात अज्ञात जो भी अपना किसी भी रूप में मनसा वाचा कर्मणा अपना सहयोग दे रहे हैं, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः हम अपने गणमान्य अतिथियों का, वक्ताओं को का हार्दिक अभिनंदन और आभार करते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you very much for your support for this international conference. And once again, thanks to all the guests in the dais. I just want to inform you that there is a technical session at 2 p.m. तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सारे स्कॉलर से, स्टूडेंट से, पार्टिसिपेंट्स से, ऑनलाइन और ऑफलाइन, कि आप 2 बजे के माइंड सेटअप के साथ यहाँ इस प्रांगण में दोबारा उपस्थित हो जाएं, सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर सेशन ऑन टाइम। थैंक यू। लंच